आप देख रहे हैं सत्याग्रह लाइव। ऑस्ट्रेलिया से एक युवक धार जिले के मनावर की लड़की से शादी करने आया है। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में रहने वाले ऐश हॉर्नस्टाइल्ड ने मनावर की तबस्सुम हुसैन से रविवार को निकाह किया। तबस्सुम हुसैन से शादी करने ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से आया ऐश जब घोड़ी पर सवार होकर निकला तो लोग इस विदेशी दूल्हे को देखते ही रह गए। ऐश ने सिर पर सेहरा बांध रखा था और साथ ही शेरवानी भी पहनी थी। बारात के दौरान दुल्हा बने ऐश भी बैंड बाजों की धुन पर नाचते नजर आए और बाराती बने रिश्तेदारों ने भी जमकर डांस किया। दुल्हे की मां जेनियर पेरी भी रास्ते भर थिरकती हुई नजर आई। वहीं दुल्हन की मां जुलेखा हुसैन की आंखों में खुशी के आंसू छलकते दिखे। पिता सादिक हुसैन रास्ते भर घोड़े को पकड़कर चलते रहे। बता दें कि शिवराज सरकार द्वारा विदेश शिक्षा योजना में साइकिल सुधारने वाले मनावर निवासी सादिक हुसैन की बेटी पढ़ाई के लिए ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया गई हुई थी, जहां ऑस्ट्रेलिया के ऐश नामक युवक से पढ़ाई के दौरान प्रेम हो गया। दोनों ने 2 अगस्त को विदेश में ही कोर्ट मैरिज कर ली थी। जब तबस्सुम की मां जुलेखा को ऐश के बारे में पता चला तो वह खुशी से फूली नहीं समाई और दोनों को इंडिया बुलाया। शादी की रस्म अदा कर रिसेप्शन कार्यक्रम धूमधाम से किया। तबस्सुम के रिश्तेदारों ने वर वधू को आशीर्वाद दिया और इंडियन रस्म रिवाजों से ऑस्ट्रेलिया का दूल्हा ऐश उनकी माता बहुत प्रसन्न हुई और खूब इंजॉय किया। हेलो, मेरा नाम तबस्सुम हुसैन है, मैं मनावर से हूँ। मैंने यहाँ से मुझे शिवराज जी का आशीर्वाद मिला, हमारे मुख्यमंत्री का, तो मैं मास्टर्स करने मोनाश ऑस्ट्रेलिया गई। वहाँ पे मैंने पढ़ाई की 2 साल, फिर मैं इंडिया आई। मैंने यहाँ काम ढूंढने की कोशिश की पर मुझे समझ नहीं आया, मुझे रिसर्च करनी थी, तो मैंने फिर से पीएचडी के लिए अप्लाई किया। फिर मुझे ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने 1 करोड़ की मदद की और मैंने ऑस्ट्रेलिया में वहाँ जाके पढ़ाई की। पढ़ाई करते हुए मैं अपने हस्बैंड से मिली, हम ऑनलाइन मिले। इन्होंने मेरे रीति रिवाजों का बहुत सम्मान किया। इन्होंने मुझे प्रॉपरली प्रपोज किया मेरे मम्मी पापा से, मेरे चाचा चाची से पूछने के बाद, और फिर हमने वहाँ पे कोर्ट में शादी की और फिर हमने यहाँ पे रीति रिवाजों से हमने रिसेप्शन किया। मध्य प्रदेश सरकार ने हमें 45 लाख की सहायता दी। हम दोनों सरकारों को ही देंगे क्योंकि हमें सम्मान तो भारत ने ही सबसे पहले तो पढ़ाया लिखाया, तो शिवराज जी के आशीर्वाद से ही हम पहुँचे वहाँ। जुलेखा हुसैन मनावर में रहती हूँ। बहुत खुशी महसूस हो रही है मुझे, बहुत मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि इसने शादी कर ली है। मतलब शादी की तो ऑस्ट्रेलिया जाके शादी की, फिर उसके बाद घर आके किया है, तो हमको बहुत खुशी जाहिर हो रही है, बहुत खुशी जाहिर हो रही है। हमारी दिली तमन्ना पूरी हो गई। ये हो गया कि 1 हज हो गया मेरा, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। Hello, my name is Ash Hornschild from Brisbane, Australia. I have studied at the University of Queensland. I studied writing, journalism, and then I have a master's degree in the arts, in management in the arts industries. I've traveled a lot. I've lived in different countries. I lived in Indonesia for several years. I lived in Germany. I've lived in the former Soviet Union. And in fact, when I was 17 years old, my mother here, she brought me to India on a school trip. So that was the first time I visited India, so when I was 17 years old. And now that I'm 34 years old, I've come back to India for the second part of my wedding, Shadi, with Tabassum, my beautiful wife. We met online when we were both living in Brisbane. And she told me her story about how far she has come in her life and how far her family and her education has brought her. And I thought that this is a keeper. So I proposed. In 2 years, we've gotten married, and I've come here to meet her family. It's been a very warm welcome here, and I feel like I came to India with one family, and I will leave India with 2 families. So it's been a very wonderful experience. How's the food? The food is good and spicy. Very good. I have mostly seen my wife's family home here, so I think Manaur is very welcoming and warm and loving. And I saw a little bit from the horse as well. What do you want to do in the future?
In the future, I will become a teacher, and I will also start a small farm in Australia. Hello, my name is Jennifer Perry, and I live in Mackay in Queensland. Ashley here is the youngest of my 6 children. I have 4 daughters and 2 sons, and he's the youngest. And about 2 years ago, or somewhere around that, Ashley introduced me to this wonderful girl, Tabby. There's kind of an instant connection between us. We just felt very comfortable with each other. It doesn't worry me whether Tabby comes from India or anywhere else. She is the lady that Ashley has fallen in love with, and we love Tabby too. So, but Tabby in particular is a very warm person, a very intelligent person, a very compassionate person, very funny person, and it's a joy having her in the family. I have loved my trip to India so far. I particularly love this little village. I really have just felt very comfortable here. Some of the food is very spicy, and I've had one bout of Delhi Belly, but usually Tabby steers me towards the plainer foods. I have really enjoyed, and I think it's good when you have a cross-cultural relationship. Like, you just learn so much more about the world. The world becomes much more open and much more enjoyable, and you get to meet some wonderful people. Is that? How long are you going to stay here? I've only got another 5 days or so in India, and then I'm going back to Australia. 3 days have I got. Oh, I've only got 3 days left here, and then I'm flying back to back to Australia. Yeah. My friends back home and my family back home are all. I'm sending them photos, on Facebook and things like that, and they're just loving the pictures that have come out of here. The wedding ceremony, the whole lot of it's been amazing, but last night was just fantastic. It was really moving. Thoroughly enjoyed it. शाहिद पठान की रिपोर्ट। अपने मोबाइल पर हर बड़ी खबर सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं सत्याग्रह लाइव। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आई है तो हमें जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी खबरों को शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले खबरें पहुंचे आप तक।